Okay, okay. Good afternoon, everyone. Welcome back to the class. So this is our second class for CSAT and welcome to IAS Origins. मेरा नाम है ऋषभ and I will be your coach, trainer, faculty, mentor for CSAT. And आज हम पढ़ेंगे coding and decoding. So our first chapter was okay. So we will learn about coding and decoding in our chapter 2. Okay. So our first chapter was direction sense and now second is coding and decoding. So those who haven't watched it, after the stream, you can watch the first chapter. Let's start with coding and decoding. We will try to recognize some patterns, and on the basis of the patterns, most of the questions can be solved. ज्यादातर question कुछ patterns recognize करके हम solve कर सकते हैं. आसान है, but आपको pattern recognize करने, number series को recognize करने आना चाहिए. ठीक है? I hope I am audible to all of you before starting. I hope I am audible to all of you. Good afternoon, Vanati. Okay, I hope I am audible to all of you. Okay, let's start the class then. Okay, so let's talk about the number one type. So pattern number one, the letter number decoding. The letter number decoding. Okay, so the letter number decoding means, for example, say there is something given that give is coded as VEGI. Okay. Similarly, the question can be asked, how will be, let's say 4 coded? Okay, how will be 4 coded? So here what we see is letter number coding में हम क्या देखते हैं? One, let's say 1, 2, 3, 4. There are 4 letters. There are 4 letters. So here what is happening? The rewriting is 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. So letter number 1 and 2 becomes last 1 and 2, and the 3 and 4 comes in first. So similar we will do here. We will write 3, 4 and then 1, 2. 3, 4 is QR, then FO. So this is one type of coding decoding. So this is letter number coding. Letter and number coding. Here what happens is the positions of the letters can change. The positions of the letter can change. ठीक है? By a specific rule or code. तो अब वो specific pattern या rule क्या होता है वो depend करता है question क्या है. ठीक है? I have given you a simple example. We will talk about more complex examples also. But still अभी क्या देखना है कि लेटर नंबर डिकोडिंग ये होती है. ठीक है? मस्ट वेट. ठीक है, ये होती है लेटर एंड नंबर डिकोडिंग. ओके, द पोजीशंस, द नंबरिंग पोजीशन कैन चेंज. सो ये एक पैटर्न हो गया कोडिंग डिकोडिंग का. ओके फाइन. नाउ डायरेक्ट कोडिंग. In direct coding, the code letters, number, symbols occur in same sequence as the corresponding letters occur in the words. So ये क्या है? Direct substitution method. Direct substitution method. ठीक है? For example, if device, here direct substitution will be happening. If device is coded as and or NATE is coded as okay, how will
How will video be coded? See, here it is written that if device is coded as BAREXA and ornate is coded as ZVNESA, okay, ZVNESA, then how will video be coded? So direct coding is direct substitution. What is direct substitution? See here, I will rewrite it. So here D is coded as B, E is coded as A, V is coded as R, I is coded as E, C is coded as X, and E is again coded as A. So this is direct substitution. In the question, it is already given that directly you can substitute one letter for the other. Similarly, for ornate, it is direct substitution. So for video, what we have to find out? We have to find V. Okay, we have to find I, we have to find D, we have to find E, and here we have to find O. So what we know is, what is V? V is R, I is E, D is B, E is A, and O is Z. So video will be coded as REBAZ. REBAZ. Okay, I hope you are getting this. I hope you are getting this. ठीक है, ये है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. दैट क्वेश्चन ऐसा रहेगा, क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा. द क्वेश्चन विल बी ऑफ द टाइप वेयर द लेटर्स and the corresponding codings will be given, where letter will be directly substituted with some other letter or any other number in the direct substitution method. तो ये हो गया डायरेक्ट कोडिंग. ठीक है, ठीक है. Now let's move forward to third type, conditional coding. Conditional coding. Conditional coding. ठीक है. Here conditional coding can be of any type. Any condition can be put. Any condition can be put. Okay. So what can be the condition? For example, car is coded as 3, 1, 18. G 1, 18. How will bat be coded as? So what condition is here? What is the condition here? क्या condition दी हुई है? So in alphabetical order, if you go by alphabetical order, if you okay, if you go by alphabetical order, तो होता क्या है? C comes at third position, A comes at first position, and R comes at 18th position. ठीक है. So similarly for BAT bat, B comes at second position, A comes at first position, and T comes at 20th position. So bat will be coded as 2120. So this is conditional coding. You have to find the coded pattern. You have to find the coded pattern and then use the similar pattern to code the question to get the answer. ठीक है, सिमिलर पैटर्न खोजना है और फिर कोड करना. ठीक. Okay. Now we will talk about this, the numbering thing, because it is very important in coding and decoding. So let's talk about it first, then we will go forward. So we will write A, B, C, G, F, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Okay. I will tell you why I have written it like this, and I will ask you to write
a similar type of thing in your notebook. Please sit with a notebook and a pen. Please sit with a notebook and a pen. Please sit with a notebook and a pen and try to solve as many questions and as fast as you can with the class itself, so that you get confidence, and when you are practicing you don't get like demotivated. ठीक है, CSAT एक important, बहुत important subject है, and after the results of prelims that have been recently came out, ये समझ में आया है कि CSAT कितना important है. People having good marks in GS are still not getting far in CSAT. तो CSAT is important, हल्के में नहीं लेना है, बट इससे डरना भी नहीं, क्योंकि डरने की चीज नहीं है, प्रैक्टिस की चीज है. ठीक है, ये प्रैक्टिस की चीज है. जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना पैटर्न रिकॉग्नाइज करना आसान करोगे अपने लिए, ओके, जितना आसान करोगे उतना जल्दी, उतना आसानी से ज्यादा नंबर ला पाओगे. एंड रीजनिंग एक बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है CSAT का. रीजनिंग एक बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है CSAT का. जनरली रीजनिंग से इजी क्वेश्चन आते हैं, इजी और इजी टू मॉडरेट. टफ क्वेश्चन बहुत कम आते हैं. 80 में से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे. 80 में से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे. इवन इफ यू डू 15 क्वेश्चंस और 16 क्वेश्चंस फ्रॉम रीजनिंग इटसेल्फ, you will be in a better position. You will be in a better position. So let's talk about this first. Let's write the positions. Okay, so here it is. Here it is. The positions of alphabet in the English. Okay, in English, what is the position of alphabet? So there are 26 alphabets in English. ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं. पोजिशनिंग है ये, देख लो. ठीक है, अब अगर आपको रिवर्स ऑफ अल्फाबेट निकालना है तो व्हाट यू डू इज 27 माइनस द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ अल्फाबेट. 27 माइनस ओरिजिनल पोजीशन ऑफ अल्फाबेट. सो 27 में से ओरिजिनल पोजीशन कम कर देंगे तो क्या आएगा? रिवर्स पोजीशन. अब इस ग्राफ से समझते हैं. इस ग्राफ से भी हम ये समझ सकते हैं कि बिना ये मैथमेटिकल ऑपरेशन किए हुए हम कैसे ये समझ सकते हैं कि रिवर्स क्या है. हियर there are 13 on one side and 13 on one side. Okay, so you can clearly see the reverse of A. The reverse position of A is 26. Reverse position of Z is 1. Reverse position of B is 25. Reverse position of Y is 2. Isn't it? Can't you see it? Isn't this diagram, isn't this very helpful? आपको करंट पोजीशन भी, ओरिजिनल पोजीशन भी दिख गई, आपको रिवर्स पोजीशन भी दिख गई. ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर इट और ट्राई टू ड्रॉ इट somewhere in the rough sheet so that you don't get confused during examination. हो सकता है याद ना हो ABCD में कौन सी पोजीशन कहाँ आती है. इट्स बेटर टू ड्रॉ दिस डायग्राम. 20 सेकंड लगेगा, 10 से 20 सेकंड लगेगा इसको बनाने में. ठीक है, 10 से 20 सेकंड लगेगा इसको बनाने में. ठीक, अब दूसरी बात जो इसमें समझानी है, आपने रिवर्स पोजिशनल नंबर तो देख लिया. ए की ओरिजिनल पोजीशन 1 है, ए की रिवर्स पोजीशन 26 है. ठीक है, इस वाले चार्ट से एक और बात पता चलती है. व्हाट इज द रिवर्स अल्फाबेट? व्हाट इज द रिवर्स अल्फाबेट? ए का रिवर्स अल्फाबेट है Z, बी का रिवर्स अल्फाबेट है Y, सी का रिवर्स अल्फाबेट है X, डी का रिवर्स अल्फाबेट है W. सिमिलरली W का रिवर्स है D, E का रिवर्स है V, V का रिवर्स है E, F का रिवर्स है U, G का रिवर्स है T, H का रिवर्स है S, I का रिवर्स है R, J का रिवर्स है Q, K का रिवर्स है P, L का रिवर्स है O, M का रिवर्स है N. सो इजंट इट वेरी फ्रूटफुल? आपकी 3 प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो गई. आपकी 3 प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो गई. आपको ओरिजिनल पोजीशन पता चल गई, आपको रिवर्स पोजीशन पता चल गई, और साथ में ये भी पता चल गया कि अल्फाबेट का एक्चुअल रिवर्स क्या है. अल्फाबेट का एक्चुअल रिवर्स क्या है ये भी पता चल गया. सो ये जो चार्ट है वो आपकी 3 समस्या को आसान कर देगा. सो इट्स बेटर टू ड्रॉ दिस. टेक योर 10 और 15 सेकेंड्स
Draw this in your rough sheet so that you don't get confused while you are going to solve reasoning paper. Okay, I will suggest it. If you can remember it without drawing it, well and good, you can do it yourself. Okay, ठीक है. ओके, सो ये थे 3 या 4 कॉन्सेप्ट. तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो कोडिंग डिकोडिंग में है वो है पैटर्न रिकॉग्निशन का. अगर आप पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगेगा, कंडीशनल सब्स्टिट्यूशन या कंडीशनल कोडिंग लगेगी, ओके, और नंबर डिकोडिंग लगेगी, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे. प्लस दिस चार्ट विच शोज द ओरिजिनल एंड रिवर्स पोजीशन. ओके, नाउ let's move forward and do some question. Okay, so here. So is it clear till now? Then I will move forward. Is it clear till now? The concepts is it clear? You can write it in the comment box. Use your comment box very judicious. ठीक है, अपने comment box को अच्छे से यूज करो. इसलिए यूज करो ताकि कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लास में दूर हो सके. उसको घर लेके नहीं जाना. ठीक है, उसको घर लेके मत जाना, नहीं तो वो कंफ्यूजन फिर एग्जाम हॉल तक जा सकती है. ठीक है. Okay, now let's do some questions because there are no, I think, okay, there are no doubts. Okay, so let's do a question. Good afternoon, Khushi. If give is coded as TREV and care is coded as XZIV, then pair will be coded as what? Okay. Hello, Varun. Good afternoon. Welcome to the class. Just be attentive and be interactive in the class. इस क्लास में आप बातचीत कर सकते हैं. ठीक है, ये स्कूल की क्लास नहीं है. नो वन विल से दैट इट इज अ फिश मार्केट. ठीक है, आप बातचीत कर सकते हैं, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं रिलेटेड टू द सब्जेक्ट. ट्राई टू स्टिक टू द सब्जेक्ट. ओके, गुड आफ्टरनून अनिक्षा. गुड आफ्टरनून. ओके, नाउ let's do it. I will do it for you, and if you want to do it yourself, pause it and do it. Pause it and do it, and then compare your answer. And then compare your answer. ठीक है, तो लेट्स डू इट. पहले तो ये देखना है कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. सो हियर सी, तो वी कैन सी हियर कि हो क्या रहा है यहाँ पे. हो क्या रहा है यहाँ पे. लेट्स टेक पेंसिल. यहाँ क्या हो रहा है. सो जी एंड टी, कलर चेंज कर लो. G and T are reverse. G and T are reverse of each other. I and R are reverse of each other. B and E are reverse. E and V are reverse. Similarly, C and X are reverse. A and Z are reverse. R and I are reverse. E and V are reverse. Why I'm telling you this? See this chart. See this chart. Okay. Let me put it on that side as well. Okay. See this chart here. If it it can't be copied. Okay. So we can clearly see it. We can clearly see here. See, E and V are opposite. E and V are opposite as per the question. Okay. Also, A and Z are opposite. So we are using this method only.
ठीक है. Now coming back to the question. So similarly, what we have to find in pair, we have to find reverse. Reverse. So this is the pattern recognition. So let's write pair. So what is the reverse of P? Reverse of P is K. What is the reverse of A? Z. What is the reverse of I? R. What is the reverse of R? I. So the answer will be KZ R I. I hope you get this. I hope you get this. Correct, Aniksha. Correct, Varun. Both of you are right. Uh, you have done it quite fast. All the best. Let's move to another question. Let's move to another question. Okay. Question number 2. So, goodness is coded as HNPCODTR, and then greatness will be coded as what? You have to tell what will be the code of greatness. Try to find the pattern. Try to find the pattern here. अगर पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लोगे तो आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना. इट्स वेरी इजी पैटर्न. ठीक है, इट्स अ वेरी इजी पैटर्न. ठीक है, you can pause it here, solve it on your own, but I, just to maintain the continuity of the class, I will not stop. Okay, I will not slow down. I will try to explain it, okay, in an easy way, in a slow way, but you can try it on your own. So let me write it. Goodness. Try to recognize the pattern. How is it coded? H N P C O D T R. Okay. So what can we see here? What can we see here? So GH plus 1, NO minus 1, plus 1, minus 1. Positions are changing. Plus 1 position, minus 1 position. Plus 1 position, minus 1 position. Okay. If goodness is plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1. So similarly, wait. Similarly, let's talk about greatness. Okay. Similar, it will be plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1. Okay. Is it clear? Is it clear? So G plus 1 is H, Q, F, Z, T, U, M, N, E, F, R, S, S, T. So the answer will be H, Q, F, Z, U, M, F, R, T. I hope I am clear. I hope I am clear about this. Is this pattern clear? Is this question clear? Is this question clear? Okay. Let's move forward then. Let's do another type. If, okay, Varun, okay, Aneksha, thank you for replying. If work is coded as 4, 12, 9, and 16. 4, 12, 9, and 16, then
women will be coded as what? Woman, not women. Okay, woman will be coded as. Okay, try to recognize the pattern. Try to recognize it faster. Okay, try to recognize the patterns in 10-20 seconds so that you can solve it within 30 to 50 seconds. ये सब लो हैंगिंग फ्रूट है, जितना जल्दी इसको सॉल्व करोगे it will be easier and beneficial for you. ठीक है, so that you can give more time in comprehensions or some maths problem. Okay. Okay, let's solve it then. I hope some of you must have recognized this pattern. Even if you don't reach till the solution, you can comment if you have recognized the pattern. Even if you have recognized the pattern, you can comment that the with the recognized pattern. कोई जरूरत नहीं कि आपको आंसर पता ही हो, आप आंसर निकाल के ही अपने कमेंट बॉक्स का यूज करो. अगर आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज हो जा रहा है, उस पैटर्न को भी आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. अगर आप डालेंगे तो इट विल बी एन इंटरैक्टिव क्लास. आई विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी, बोथ ऑफ अस विल बी हैप्पी. ठीक है, तो क्लास खुश रहेगी. Okay, so let's see it here. Okay, write it here. Work. So work is coded as 4, 12, 9, 16. So we can clearly see it is not the original position that is working. It is not the original position that is working. So what is the reverse position? Let's talk about reverse position. So reverse positions. Okay. W का original position is 23 and reverse position is 4. Similarly for O, reverse position 12, R का reverse position 9 because R का opposite is I का original is 9, R का reverse is 9. Okay, also by 27 minus original method भी you can निकाल सकते हो. 27 minus original position of R was 18. So क्या बचेगा 9. K का reverse position 16. So the pattern is reverse positions. Let's talk about woman then. If we are talking about reverse position, let's talk about woman. ठीक है, अब W का रिवर्स 4, W का रिवर्स 4, O का रिवर्स 12, O का रिवर्स 12, M का रिवर्स 14, A का रिवर्स 26, N का रिवर्स 13, N का रिवर्स 13. तो क्या बना इसमें पैटर्न? 4, 12, 14, 26 and 30. I hope you get this. I hope you get the pattern. पैटर्न समझ में आ गया? पैटर्न रिकॉग्नाइज करना ज्यादा जरूरी है तुरंत सॉल्व करने. अगर पैटर्न रिकॉग्नाइज हो गया तो क्वेश्चन तो 10 सेकंड में बन जाएगा. पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया तो क्वेश्चन 10 सेकंड में बन जाएगा. ठीक है, तो अगर आपको पैटर्न भी रिकॉग्नाइज हो रहा है, यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन, इन द लाइव कमेंट सेक्शन. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, डू सम अदर क्वेश्चन. ठीक है, नाउ अनदर टाइप. इफ कप if cup is coded as 40, then kite will be coded as what? Then kite will be coded as what? Okay, if cup is coded as 40, then kite will be coded as what? So it's a different type of question. Try to recognize the pattern and try to comment it in the comment box. ठीक है, ट्राई करो कमेंट को कमेंट बॉक्स में करने का. ठीक है, let's do it then. C-U-P. The position of C, it's right, it's like this. C-U-P.
The position of C in the alphabet. Position of C in the alphabet is 3. U is 21 and P is 16. If you add the value of these positions, it comes as 40. Okay, so this is the pattern. Pattern can also be reverse. ऐसा भी हो सकता है कि reverse position को add करके आंसर आ रहा हो, बट इस केस में वो नहीं है. इस केस में वो नहीं है, ओरिजिनल पोजीशन से काम चल जा रहा. Correct, Varun. You are absolutely right. It was a sum pattern. It was a sum pattern. Varun, you were absolutely right. ठीक है, तो let's talk about kite then. Position of K 11, I 9, T 20, E 5. If you add all this, what will you get? If you add all this, what will you get? You will get 45. So answer is 45. So this is the answer. Correct, Aniksha. Correct, Varun. Both of you are right. बिल्कुल सही जवाब है. And I'm very happy that we are on the same page. Okay. Okay. For everyone else, you can also use your comment box. Okay. Now let's talk about another type. Okay, now let's talk about another type. Mostly this type of question is a direct substitution question. Direct substitution. I will tell you what I am going to write. If gone is coded as 5% to mesh, and medal is coded as Muskan. Lucy, you were also right. 45 was the answer. Correct, Muskan. You are absolutely right. Now another question. 4 hash $3 at the rate. Since symbols are given here, you can clearly see कि इसमें पैटर्न तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा. आप कोई बुद्धि नहीं लगा सकते इसमें कि प्लस कर लें 2, माइनस कर लें 3. ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन से +2 -3 कर लें, ऐसा नहीं कर सकते. दिस विल ऑलवेज बी अ केस ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफ द सिंबल्स आर इन्वॉल्व. तो हमें बताना है देन फाइंड हाउ इज गोल्ड कोडेड एज. तो हमें बात किसी करनी है GOLD. सो GOL and D. So GO is 5 and percent. L is the fifth one at the rate, and D is the middle one, 3. So gold will be coded as 5% at the rate 3. 5% at the rate 3. I hope you are getting this. I hope you are getting this. Any issue? Any issues till now? Any issues till now? Okay, now no issues. So we have an announcement to make. Listen carefully. We have an announcement. Correct, Varun. 5% at the rate 3. You are absolutely right. So the announcement. Listen, we are going to launch 2025 UPSC comprehensive course. There is going to a comprehensive course for UPSC is going to be launched on 27th of May. 27th of May 2024. 2024. So if you are targeting UPSC 2025, the course is getting launched on 27th of May. Do enroll for it. And our mentors, teachers, coaches, faculties, and creators will take care of you till your success. Okay, so 27 मई 2024 से हमारा नया कोर्स यूपीएससी के लिए लॉन्च हो रहा है. IAS Origin 27 मई को
लॉन्च कर रहा है 2025 यूपीएससी के लिए कोर्स. सो इफ यू वांट यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. करेक्ट मुस्कान. Muskan, you are also right. 5% at the rate 3. It is correct. Okay. Now, question. If submit is coded as TVCNJU, then Varun, you can call on the office numbers. You can call on the office numbers to get to know about offline batches and online batches both. ठीक है? Then NEVER will be coded as
Hello, let me check if I'm audible or not. Hello, let me check. Okay, now I think I am audible. I have checked it. Okay, let's move forward from here. So, yeah, let's move forward from here. So, Khushi, you were right for the last question. Now, moving forward. Now, the question, one more time. Okay, thank you. Mirror is coded as 17, 21, 12, 12, 15, 12. Then Iron Man will be coded as what? Okay. Then Iron Man will be coded as what? Try to think about it. Try to think about it. I will give you a 10-second head start. 10-second head start so that you can recognize a pattern. And I will also give you a hint. You can go back to the chart I have told you about. You will definitely recognize a pattern here. Okay. Now, let's write it. लिखने तो आता ही है. लिख लेते हैं पहले. Coding is okay. Okay, let's see the pattern here. Let's see the pattern here. The pattern है क्या? So let's talk about, क्योंकि देखो m का करेक्ट साइड है, m का पोजीशन क्या होता है? What is the position of m? 13. 13 plus 4 is 17. I का पोजीशन क्या होता है? 9. So ऐसे तो नहीं हो पा रहा. ठीक है. Let's talk about reverse positions. m का रिवर्स 14, I का रिवर्स 18, R का रिवर्स एंड I एंड R आर रिवर्स. So I का R का रिवर्स I होता है. रिवर्स पोजीशन 9, 9. O का रिवर्स पोजीशन 12, R का रिवर्स पोजीशन 9. ठीक है. So if we talk about the reverse positions, so we see a pattern. Again we see a pattern. तो pattern क्या है? Reverse position plus 3, reverse position plus 3, reverse position plus 3, reverse position plus 3. So what we have to do here is reverse position plus 3. But we will play smart. Smart क्या होता है यहाँ पे? IRMO, इसका तो वैल्यू हमें पता है. IROM का वैल्यू हमें पता है, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे. I का वैल्यू 21, R का वैल्यू 12, O का वैल्यू 15, N का वैल्यू निकालना होगा. अगेन M का वैल्यू 17, A का वैल्यू वी विल टॉक अबाउट इट, एंड देन N का वैल्यू. सो हमें N, A और का वैल्यू निकालना है बस. सो A का रिवर्स 26,
26 plus 3 29, a का रिवर्स 26 plus 3 29, n is 13, ठीक है। n का रिवर्स क्या होता है, n का रिवर्स इज 13, 13 plus 3 16, 13 plus 3 16, here also 16, so the answer becomes 21, 12, 15, 16, 17, 29, 16. I hope you get this. I hope you get this. Correct, Varun. Reverse plus 3 was the answer. Was the pattern. बिल्कुल सही जवाब है. Reverse plus 3 हमारा pattern था. I hope you get this solution. Everyone who is watching gets this solution. Okay. Now let's do another type. Another type. The phrase type question. The phrase type. Where phrases are coded. For example, there is a question had, lad, sad. Then children like fun. Okay, we like ice cream and children want ice cream. Okay, so here what we are talking about here is, हम यहाँ बात क्या करना चाह रहे हैं, बात ये करना चाह रहे हैं कि जो ओरिजिनल जैसे चिल्ड्रन है, लाइक है, फन है, वो यहाँ कहीं कोडेड है, ठीक है, यहाँ कहीं कोडेड है, ठीक है। अब किसका क्या कोड है वो हमें कंपेयर करना होगा हर लाइन पे, वो हमें कंपेयर करना होगा हर लाइन पे, और जब हम कंपेयर करेंगे तो हम पहुंच पाएंगे इस नतीजे पर कि चिल्ड्रन का क्या कोड है, आइसक्रीम का क्या कोड है। तो अब कोड कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आइसक्रीम सेकंड में है, आइसक्रीम थर्ड में है, ठीक है। तो जो भी कॉमन होगा सेकंड और थर्ड में वो आइसक्रीम हो जाएगा। क्या है कॉमन, जेड, तो JAD becomes the coding of ice cream. Yeah, JAD becomes the coding of ice cream. ठीक है। Similarly, children is here and wait. Children is here. Children is here. ठीक है। And between these two, there are no other common words. So यहाँ पे देखो कि यहाँ और यहाँ क्या कॉमन है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि टैड, नैड, हैड, लैड, जेड, sorry, it is not टैड, will be लैड, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि कॉमन क्या है, यहाँ लैड कॉमन है, यहाँ भी लैड कॉमन है। तो चिल्ड्रन के लिए कोड क्या हो गया, LAD, लैड, ठीक है। चिल्ड्रन के लिए कोड क्या हो गया, LAD, लैड, फाइन। सिमिलरली वी सी हियर कि लाइक और लाइक, लाइक और लाइक, टॉक अबाउट लाइक एंड लाइक, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि अब इन दोनों में क्या कॉमन है, जेड इज कॉमन, क्या, z is common, so z becomes like. Okay, you don't have to find everything, you have to find only those codes which are asked in the question. For example, अगर question में ये पूछ देता कि what is the code for children, what is the code for children, so you must have find out कि children is common in line 1 and line 2,
And what is the common word between line 1 and line 2? It becomes lad and lad. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे देखो कैड बचा है, KAD कैड. आइसक्रीम हो गया, लाइक हो गया, बचा वी. सो कैड इज वी. सो कैड इज वी. ठीक है, कैड इज वी. अब यहाँ जैसे नैड बचा है, यहाँ बचा है नैड, यहाँ बचा है वॉन्ट. सो नैड एंड वॉन्ट और yeah. Okay. Okay, and here it is fun. What is left here? Had. Okay, so children like fun, we like ice cream, children want ice cream. We now know the coding of every word. We now know coding of each and every word. But maybe in the exam you don't need to find every codes. You don't need to find code of everything. For example, ये phrase दे दिया और exam में पूछ दिया question कि what is code for children. तो लिख लोगे ना, तो लिख लोगे कि चिल्ड्रन का कोड क्या है, LED लैड. फॉर एग्जाम्पल ये पूछ दिया कि चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, उसका कोड क्या होगा? जैसा वरुण ने लिखा है चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, लेट्स टॉक अबाउट दैट ओनली. अगर कोड में लिख दिया चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, सो हम जानते हैं आइसक्रीम का कोड क्या है, जेड. ठीक है, ठीक है. और फिर चिल्ड्रन का कोड क्या है, लेड. ओके, और लाइक का कोड क्या है, जेड. So this will be the coded sentence for children like ice cream. Children like ice cream. I hope, yeah, you can write it like that also. Yeah. Correct, Varun. You are absolutely right. So I hope you are getting it what I am trying to tell you. यहाँ मैं बताना क्या चाह रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा कि you don't need to find every codes in phrase type. You only have to find those codes which are necessary to answer your question that has been asked. ठीक है, बट ऐसे फ्रेजेस दिए होंगे ताकि आप उस कोड तक पहुंच पाए. और अगर नहीं पहुंच पाओगे तो आंसर ये दे देना कि इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर, आई होप आई एम क्लियर. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, solve some other question. Is there any problem till now? Is there any problem till now? Okay, now one more type. One more type. One more type. Say, see, if air is coded as green, green is blue, blue is sky. ठीक है, sky is yellow, yellow is water, and water is pink. Water is pink. ठीक है, then the question can be asked, what is the color of sky? What is the color of clear sky? Sorry. What is the color of clear sky? What is the color of clear sky?
What is the color of clear sky? ठीक है, तो simply answer is color of clear sky will be always be blue. Even if you don't go by the code, the color of clear sky by logic is blue. So the answer will be blue. Wait. Varun Chaudhary, you are too early, but it's not bad to be too early. I will suggest you read NCRTs, join a good coaching. Okay. Now you can join us also. Now, one more announcement to make, that we are going, that IAS Origin from the coming Sunday, there will be 3-hour mentorship program. 3-hour, wait. Because color of clear sky is blue. If only sky would have been written, the color of sky would have been yellow. ठीक है, clear sky means साफ आसमान, blue है. So you will have to recognize pattern and you will have to answer as per the options. Just wait a minute. ठीक है, so every Sunday there will be 3-hour master class, 3-hour master class, which will be absolutely free. ठीक है, 3-hour master class for UPSC, that will be absolutely free of cost. You will just have to register. You will have to register, and where the registration link is in the description box. So for every Sunday 3-hour UPSC master class, which will be free for you, you can register it from the description box below. Okay, you can register it from the description box below. And just wait. Okay, let's do one more question. Similar type of question so that you don't get confused. So in a language, let's say in a language on Jupiter, cages are rocket. ठीक है, trap is coded as planet. ठीक है, aeroplane is coded as cycle. Rocket is coded as trap. Planet is coded as aeroplane. And cycle is coded as car. Means in a language, cages are called rocket, trap is called planet, aeroplane is called cycle, like that. So in the same language, the question is, what will be Earth called? Earth को क्या बोला जाए? Okay, so you will have to logically deduce it. Logically deduce करना होगा. अब Earth क्या होती है? What is Earth? Earth is a planet. Earth is a planet. And what is planet coded as? Aeroplane. So the answer will be aeroplane. Aeroplane. Okay, so you will have to logically deduce, okay, and get to the answer. ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं. It is also a type in coding and decoding. Okay, so we will stop our class here. आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं और go and revise it and practice it.
since this class is for 2025, you have a lot of time. Practice it at least 1 hour on your own. Practice it, and we will meet again tomorrow in the next class. I hope you like the lecture और आज के लेक्चर से आपके नॉलेज में कोई वैल्यू एडिशन हुआ है, और अगर वैल्यू एडिशन हुआ है और क्लास अच्छी लगी है तो डू like it, share it, subscribe to IAS Origin, and we will meet again tomorrow. And I hope you will be back. Okay, and I hope you will like me. Till then, thank you everyone. Till then, thank you everyone. Bye bye. Have a good day. Bye bye. Have a good day. Thank you. Okay. नहीं नहीं, ट्रैप नहीं है, ट्रैप को प्लैनेट बोलते हैं वरुण, ट्रैप को प्लैनेट बोलते हैं, प्लैनेट के लिए ट्रैप नहीं है। ठीक है, ट्रैप को प्लैनेट बोलते हैं, प्लैनेट को तो एरोप्लेन बोलते हैं। ठीक है, रिवर्स नहीं जा सकते। ठीक है, रिवर्स नहीं जा सकते। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, आई होप यू गेट इट, रिवर्स नहीं जा सकते। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय। Let me check if there are more comments.